start with Ishan, ji from Housing Department. So, Ishan ji, if you can explain about the various funding models being already used and what are the future needs in funding and proposed models being discussed by the government. Thank you, Ravi ji. First of all, I would like to thank Elets for hosting this really good conference, and I would also like to thank all the eminent panelists who have joined me on the stage here today. I have dual roles in the government of UP as Special Secretary to Honorable CM and also as Additional Housing Commissioner in the UP AVP department. As far as I am concerned, looking at the different types of fundings that we have received in the state, so there are several facets of funding. First of all, I think there are 4 major stakeholders which come whenever a project is funded. On one side, we have 2 mediators. The person who is building the project, it can be a builder, it can be UP AVP. Then there is another mediator on the sides of the bank or any financial institutions. And other 2 stakeholders who are the ultimate beneficiary of this whole process are either the retail investors or the retail buyers of the plots, or who are going to take advantage of a particular facility that is being provided. So in the state of UP, we have been looking at different sorts of fundings. In UP AVP, we have built projects based on purely PPP models. In UP specifically, we have also looked at how to streamline these projects and how to sort of have a good consultation from the beginning. So in UP, we have got big PPP projects like Jewar Airport, which has come in. As far as UP AVP is concerned, we are looking to build a convention center which is based on a PPP model. So that is one. Secondly, we are also looking for innovative kind of fundings where we are presently trying to find self-financed group housing projects where certain associations come in. For example, doctors or engineers, they can take land from us, they can pool their money. And once they have pooled their money, we will give them the specifications, have a consultation, and then we can build the project from them. Apart from this, there are simple projects like we directly fund the projects also. And we are also looking as UP AVP, we are also trying to get into municipal bonds, real estate investment trust, all these different facets of funding we are looking right now. Fantastic. I think the growth of UP is highly dependent on growth of the urban areas, and funding requirements are massive. So let me request our speaker from SBI Bank to speak about what are your views about these issues. गोमती नदी के किनारे बसे सुंदर लखनऊ शहर के लखनवी तहजीब वाले लोगों के बीच में आने की अत्यंत खुशी है। उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व, सीनियर नेतृत्व, मैं गुप्ता साहब के सवालों में कुछ सवाल और जोड़ देता हूँ जिससे कि वो बातें कह पाऊँ जो शायद आपको अच्छी लगे। पहला सवाल ये, क्या हमारे देश के बैंकों में सामर्थ्य है आपके सपनों और आपके अपनों के सपनों को पंख देने का? दूसरा सवाल ये है, क्या हम लंबे समय तक के प्रोजेक्ट को फंडिंग कर सकते हैं? तीसरा सवाल ये है, क्या हमारे देश में लोन महंगे हैं? और चौथा सवाल, देश में क्या हो रहा है? पहले से शुरू करते हैं आपकी इजाजत। सन 2022-23 में एक हम सब इस्तेमाल करते हैं ASB, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जो शायद बैंकिंग से फाइनेंस से जुड़े होंगे उन्हें ये शब्द पता होगा। जो बैंकों का समूह है उसको ASC भी कहते हैं। RBI एक डाटा पब्लिश करता है कि साल भर में कितना क्रेडिट में लोन में ग्रोथ हुआ। सो FY 2023 में ये जो ASCB क्रेडिट ग्रोथ है दैट वाज 18.19 लाख करोड़। Now we can add something to this.
कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, इनमें जो ग्रोथ हुआ दैट वाज 5.07 लाख करोड़। तो आपका ये 18-19 और 5.07, नाउ वी आर एट 23.25 समथिंग। जो नेट एफडीआई कंट्री में आया दैट वाज अराउंड 2.32 लाख करोड़। तो आप जोड़ देते हैं तो आप आ जाते हैं लगभग 25.5 लाख करोड़ पे। दिस वाज द मनी अवेलेबल इन द कंट्री फॉर मीटिंग द एस्पिरेशंस। नाउ हाउ डू आई कंपेयर, ये ज्यादा है कम है? सो लेट मी गिव यू अनदर डाटा पॉइंट। 2010 में जो एसीबी का फिगर था क्रेडिट आउटस्टैंडिंग दैट वाज अराउंड 30 लाख करोड़। कम टू 2015 we were around 61 lakh crore. Come to 2022 we were around 119 lakh crore. अभी ये है 143 लाख करोड़। मैं 143.91 है, सो लेट अस से 144 लाख करोड़। मार्च का फिगर भी पकड़ता हूँ, मार्च 23 का जिससे हम फिगर कंपेयर कर रहे हैं, तो इट वाज अराउंड 137 लाख करोड़। नाउ इस 137 लाख में वी कैन ऐड वन मोर फिगर। जो एनबीएफसी हमारे समूह है उनका लगभग आई हैव सितंबर डाटा दैट वाज अराउंड 31.5 लाख करोड़। क्योंकि एनबीएफसी बैंक से भी बारो करते हैं लगभग 25% के आसपास, तो कुछ 25% कम कर दीजिए तो आप 23-24 करोड़ पकड़ लीजिए। तो 137 में आप 23-24 जोड़ते हैं तो वी आर 160 लाख करोड़। इस 160 लाख करोड़ के बेस पे 25 लाख करोड़ का ग्रोथ हुआ है। दिस इज द मनी अवेलेबल इन द सिस्टम, not a small sum of money from any count. And you have seen every 5, 6, 7 years we are growing by double. So there is a adequate money available in the system. दूसरा सवाल ये है कि क्या हम लंबे समय के लिए फंड कर सकते हैं? You must have heard ALM, ये कहानी, वो प्रॉब्लम। All of you, when you walk into the bank, let us say when you are 25, 30 year old, the bank is happy to give you a housing loan till you retire. 25 साल का कोई जवान आता है तो 35 ईयर का लोन आपको मिल जाएगा। एसबीआई का जो हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो है लगभग 6 लाख करोड़ है। एंड अनदर लार्ज प्लेयर इफ आई एड एचडीएफसी देयर अनदर 6 लाख करोड़, तो 12 लाख करोड़ हो गया। रफली 20% एसबीआई है, 20% एचडीएफसी, 40% हो गया। तो इसको आप एक्स्ट्रा प्रोड कर दीजिए तो 12, 24, 30 हो गया। तो 30 लाख करोड़ का जो पोर्टफोलियो है ये वो पोर्टफोलियो है जो 35 साल तक के लिए मिल गया। Now we link this again to 160. So that means a significant percentage of the money can be lent for a longer term without any problem. Same RBI, same guideline, any government authority. So that means the country and the banks have the ability to lend long term. दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ पॉलिसी ठीक नहीं है। जहाँ पॉलिसी अच्छी है वहां पर लॉन्ग टर्म लैंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो टू रिक्वेस्ट ऑल द लीडरशिप इन द गवर्नमेंट दैट सेट द पॉलिसी राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक आई वाज विथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दे आर ट्राइंग टू सेट अप 7 गीगावाट ऑफ सोलर फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने एक स्कीम बनाई कि जहाँ डेफिसिट जोन है हर तालुका पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पर जो भी रेवेन्यू लैंड है उसको यूज़ करेंगे। छोटी मोटी कमी पड़ेगी तो प्राइवेट लैंड भी ले लेंगे एंड दे वुड इनवाइट बिड्स फ्रॉम द डेवलपर टू सेट अप दैट 7 गीगावाट प्लांट। सरकार की भी कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सपोर्ट मिलेगा। तो मैडम आभा शुक्ला से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो हम प्राइवेट लैंड लेंगे वहाँ हमने क्या काम किया है कि किसान की जो भी जमीन आएगी हमारे पास में, हम उनको हर साल, चूंकि इनकम की आदत होती है, हर साल हम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे देंगे। तो कभी होता है ना, जैसे हम बचपन में पहाड़े याद करते थे तो कोई पूछे कि 17 × 7 कितना होता है, तुरंत जवाब आता है। अभी नहीं याद है मुझे, एक अलग बात है। तो हमें तुरंत समझ में आया कि ये स्कीम नहीं काम करेगी। क्यों काम नहीं करेगी मैं बताता हूँ। 25 साल के लिए आप हम में से कोई भी क्या अपना मकान किराए पे देगा जिसका मैं रेट आज तय कर लूं? नहीं देगा। मेरे को 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद लगेगा ही लगेगा कि ये भाव तो कम था। हमने उनसे कहा कि आप इसके बजाय जो भी आपको वाजिब कीमत लगती है 25 साल का एक मुश्त पैसा किसान को अभी दे दीजिए एंड लेट द बैंक्स डू द डिजाइन। किसान को 1 साल में पैसा चाहिए, हर साल चाहिए,
हर 5 साल बाद चाहिए, हर 10 साल बाद चाहिए, the banks can do the design. So you are taken out of this burden. Otherwise, there will be some political grouping, and the grouping will force the whole scheme to mess up. So simple consultations with the bankers can help you look at those gaps wherein probably you have the good thought, but on the ground those thoughts do not work. तीसरा सवाल जो ये है कि क्या हमारे लोन महंगे हैं? We keep working with the government of India a lot. So government of India was talking to ADB to raise the money. तो ADB ने कहा 15 साल के लोन की बात हो रही थी, थोड़ा लार्ज सम्स था कि we will give you the money at SOFR which is around 5% plus 1.25. तो आपका हो गया 6.25%. तो 15 साल में आप तो हैज करेंगे. सपोज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंगल से सोचे तो उनकी कई बार पॉलिसी होती है हैज नहीं करते, बट समटाइम्स यू डू नॉट रियलाइज कि अल्टीमेटली कितना पे कर दिया. अब हैज करने जाएंगे इस तरह के लोन को तो कॉस्ट आएगी लोग 7% से 7.5%. 6 और में 7 जोड़िए 13%. ये तो सस्ता नहीं हुआ. नॉर्मली आप गवर्नमेंट बैंक से बोरो करेंगे, किसी बैंक से बोरो करेंगे 9 से 10% में आसानी से लोन मिल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो दी ओवरसीज मनी इज नॉट चीप. चीप कब होता है कि आपकी जरूरत 15 साल की है, 20 साल की, आप 2 साल 3 साल का पैसा उठा लेते हैं, वो दूसरी समस्या में फंस जाते हैं. सो इफ यू आर बोरिंग शॉर्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म नीड देन इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन. आखिरी जो सवाल जो मैंने रेज किया था कि क्या आपके जो आप स्मार्ट, लिवेबल, अफोर्डेबल अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देश में हो क्या रहा है? Whether people are keen to participate on all this. So we see lot of active private sector participation across all the states in the country. We also see that lot of overseas players, overseas sovereign wealth funds, overseas investors, very very keen to come in India. कुछ मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण बताता हूं कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कितनी मेहनत करने को तैयार हैं. एक आपके मेरठ की सुभाष त्यागी जी हैं, कर्नाटक में प्लांट बना रहे हैं, ग्लास फैक्ट्री. जब तक उनकी पहली फर्नेस फायर नहीं हो गई, घर नहीं गए. 7-8 महीने वहीं टेंट लगा के काम कर रहे हैं. मैंने उनको वही कहा, देयर वाज अ फंक्शन, कर्नाटका से सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे. तो आई टोल्ड देम कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो एक कहानी सुनी थी कि जब भाखड़ा नंगल बांध बंध रहा था तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया वहाँ तंबू लगा के वहीं रहने लगे, जिससे कि मेरे सारे वर्कर को लगे कि हम सभी साथ हैं. The entrepreneur in your country is determined to put their best foot. 7 महीने घर न जाना बस सामान्य बात नहीं है, but he has delivered if you check their record, in the shortest span of time they have completed the unit. We have funded around 2,500 crore to them. Couple of more examples I will share with you. So I was meeting this gentleman Bhavesh Agrawal from Ola. We have supported them. पहले होता था हमारे अपने अच्छे मेरिटोरियस विद्यार्थी बाहर जाते थे काम करने के लिए. उसके पास लगभग 25 गोरे लोग हैं, सारे के सारे PhD हैं मटेरियल साइंस में, बैटरी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं. मिला मैं उनसे कई लोगों से, तो उनमें से एक ने बोला ये नारियल बहुत फोड़ता है. मतलब the success that they are delivering. So typically in India, whenever you achieve success, then you will break nariyal and then you celebrate the success. And I found that those people who are working, they are not the CEOs. CEOs तो बहुत बार होते हैं. You will find Air India CEO, Indigo CEO from abroad. But the middle class people coming and working as expert in the India, feeling happy about it, I have seen that is happening now. एक इन्वेस्टर की मैं बात करूंगा. आई मेट द CEO ऑफ हैपेक्लॉइड. हैपेक्लॉइड इज अ शिपिंग मैग्नेट. उन्होंने एक कंपनी है मुंबई में, JM बख्शी उनके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट किया है. वो मेरे को बोले हमारे पास बैलेंस शीट में 20 बिलियन कैश पड़ा है, क्या आप बताएंगे कहाँ लगा दें. सब दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स.
So you go to across any part of the country, you see people working hard to meet aspirations. So we do not see any dearth. So as I was explaining, पैसे की कमी नहीं है, इच्छाओं में थोड़ी सी हमें बल डालना पड़ेगा। किस तरह का बल? जब हम किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं एज अ गवर्नमेंट एंटिटी, कैन वी सी दैट प्लानिंग इज एज परफेक्ट एज पॉसिबल। जब मैं डीपीआर बनाऊं तो सबसे सस्ते वाले आदमी से डीपीआर ना बनवाऊं, उससे डीपीआर बनवाऊं जिसको डीपीआर बनाना आता है। मैनी टाइम्स व्हेन यू आर डिजाइनिंग, यू आर कंसेप्चुलाइजिंग, वहां जो एरर होती है वो निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। आई विल स्टॉप इट हियर, बट लास्ट आई वुड से ओनली वन थिंग, दैट there is no dearth of money available in the country, there is no dearth of ability to fund long term. Please. अशोक जी, बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया, जो चैलेंजेस हैं वो भी बताए और जो अपॉर्चुनिटीज वो भी बताए। सो आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यस, सो let me request our zonal head from ICICI Bank, Mr. Saif Kazmi, to talk about these issues. Yes. Thank you for this enlightening session today. So I'll give you a very different kind of perception or understanding that we'll talk today. बैंकिंग में आजकल हम क्या देख रहे हैं कि एक जो ट्रेडिशनल बैंकर होता था वो एसेट्स यानी एडवांसेस देखता था और डिपॉजिट्स देखता था। आज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी अब हमारे MIS का पार्ट हो गया है, और हमको ये भी लगता है कि हमारे ही कितने बोरोवर्स हैं जो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आप अगर देखेंगे तो जो शेयर मार्केट की ग्रोथ है, या जिस प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में आ रहे हैं, SIP का वॉल्यूम अगर आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा हो तो जितना एनुअल वॉल्यूम होता था उतना वॉल्यूम अब मंथली होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा क्लास है विच इज इंक्रीजिंग। Now, when you talk of this class increasing, and then when you look at what we've been discussing since morning, कि हमारे पास में अर्बन में इतना स्कोप है और कितना कुछ हमें करना है और हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जब भी ईशान जी ने बताया बॉन्ड्स के बारे में, सो आई थिंक द नीड और द टाइम फॉर अस हैज टू कम टू गो बियॉन्ड व्हाट इज ट्रेडिशनल, एंड कहीं ना कहीं वट एवर इज द फाइनेंसिंग नीड्स of the requirement for maybe the urban infrastructure, urban solutions that we have seen, we will need to have to reach out to this investor class which is there. So one very good example is municipal bonds जो अभी आए हैं, but with limited success. So if I talk of the urban local bodies, for example, so we've got around 17 here in Nagar Nigams, out of which only 2 have been able to successfully come up. I believe 4 are also coming up with municipal bonds by September. We've got close to 200 Nagar Palika Parishads and almost 585 Nagar Panchayats. Now, maybe on an innovative purpose, if every Nagar Panchayat or Nagar Palika may not be in a position to come up with a municipal bond, but we can always look at pooling them and having an umbrella, maybe an SPV kind of structure in which you can, for a specific purpose, raise bonds and then reach out to the investor. Now coming to the investor side. So typically what happens is, aapne sir ne mention kiya regarding meeting certain big names. So they have reached a stage where there are a lot of, I would say, issues in terms of their financial statements, in terms of their accounting, in terms of their books of accounts, which are as per the standard norms. So one thing that we will also need to do is that if we expect that an investor will put his money in a Lucknow Nagar Nigam or maybe any urban this thing, then he will also expect that the standards of accounting, standards of banking practice, etc. should be level. So my personal belief is that if we have to think long term and if we have to mirror how our country is moving, then somewhere I think we will have to walk this journey, ensure that all our bodies who are development authorities or the municipal corporations, etc., they have a framework in which they are adhered to it, and they present themselves as a viable investment option where the investors should come and put their money, and then that could address a lot of their financing requirements.
बैंकिंग और फाइनेंस का एक बिल्कुल बेसिक, किसी भी प्रोजेक्ट का जो बिल्कुल बेसिक होता है वो ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट बिकॉज ऑफ द कैश फ्लोज। हम अपने बैलेंस अकाउंट में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में हम अपने कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करते हैं। नाउ द एविडेंस अक्रॉस द वर्ल्ड इज क्लियर ऑन फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अच्छा नहीं करते। जैसे हम किसी क्रेडिटर की क्रेडिबिलिटी को हम अच्छे से रेट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ डेटा, वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लान्स जिसमें हम पता लगा पाएं कि हमसे जो लोन ले रहा है गवर्नमेंट से, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो हमको सही अमाउंट पे हमारे कैश फ्लोज को देगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमें उसमें ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। बट वॉट वी कैन गिव टू द बैंक्स एंड टू द फाइनेंसर्स जिसके माध्यम से हमें इन्वेस्टमेंट मिले, एक तो है रेगुलेटरी सर्टेनिटी। वॉट वी कैन डू इज दैट वी कैन मेक आवर रूल्स ईजियर, वी कैन गिव देम द रूल्स, मतलब हमको बता सकते हैं कि ये हमारे रूल्स हैं और इसके अंदर जो आएगा वो हम देंगे। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को हम कम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कमिश्नर सर की गाइडेंस में हम लोगों ने PMS को लॉन्च किया। ऑल आर प्रॉपर्टीज अक्रॉस द स्टेट ऑफ यूपीज आर नाउ tabulated, they are with us. We know which properties are under dispute, we know which properties we have sold, we also know कि हमारी भूमि का कितना अर्जन हो गया और उसमें हमने क्या क्या डेवलप कर लिया। Now this is a small information, but it takes so much of transaction cost out of the loaning process of the banks that banks are coming forward to take it, right? So हम लोग information को भी better कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आई थिंक हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं वो है कंसल्टेटिव मैकेनिज्म्स। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से पहले, ये मैंने जेवर एयरपोर्ट को बहुत क्लोजली देखा, जब उसमें इन्वेस्टर्स आए और हमें कंसेशनर्स मिले तो देयर वाज अ ह्यूज कंसल्टेटिव प्रोसेस अक्रॉस द बोर्ड। तो वी न्यू दैट व्हाट दे वांट एंड व्हाट वी वांट। रिसेंटली हम लोग यूपीएवीपी में कुछ प्रोजेक्ट्स फ्लोट करना चाह रहे थे एंड कमिश्नर सर केम अप विद द आइडिया दैट वी शुड फ्लोट requirement of interest from the various stakeholders. For example, if we want to build a hotel, we should know whether somebody will come up and build a hotel. If somebody comes up, then whether we know that that hotel he will take in such amount of land or he will want that particular facilities there. Same for the hospitals. That also gave us an idea. A lot of investors came, but a lot of investors didn't come. And then we knew that this project is not viable. So stakeholder say consultation, the consultation with stakeholders at the right amount of time also gives a lot of regularity, like regulation certainty to the banks so that they can come up. Our idea is that as UPAVP, as housing department, we should act as a mediator. Our idea is to give you land which is beyond any sort of जिस पे कोई dispute ना हो. Our construction work, our DPR work should be finalized. And softwares like OBPass, etc., which give us a certainty that the maps will be passed in a certain amount of time are available to you so that you have a certainty that this project will go forward. Beyond that, the risk certainty or the risk differentiation between the investor and the banks who is funding them is for them to decide, right? So as far as I am concerned and what our eminent panels say, that is the role that government or the UPAVP has to play. Sure. So I think So normally what we have seen that consultative process is not involving banks and which is leading to a gap. So जैसे हम कहते हैं कि 70% पैसा जिसके पास से आ रहा है उसको प्लीज बुला के पूछ लीजिए, एडवाइस फ्री है। Because many times we have seen certain things, whether you have the right kind of person from the developer side on the table, we do not know. In banks, typically those who are used to appraising these kind of project loans, they would be aware. So my request would always be that the consultative process is one which will tell you what all needs to be done, and you have all the stakeholders, including the banks, that would certainly take care. And I think most of the government bodies, they are aware what is to be done. Only the gaps which needs to be filled up. So consultative process is one which can take care of that part. Thank you. Sure. ईशान जी, आपकी ज़्यादातर बातें ऑलरेडी आ ही चुकी हैं। मैं बस बैंक्स की तरफ से आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट
कि एटलीस्ट जो हमारी अथॉरिटीज हैं या यूपी वीपी है, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन देयर बिहाफ, माई रिक्वेस्ट टू ऑल द बैंक्स वुड बी दैट एटलीस्ट आवर लैंड इज डिस्प्यूट फ्री एंड यू हैव a guarantee of the value of that particular asset, because our costing systems is very robust. So if you look in entirety, the transaction cost of giving a loan to a person who has taken flat with the government or UPVP or any authorities will come lower to the overall procedure that banks takes to give loan to a particular asset in not in such a scenario. So my request to all the banks has been and would be that once a lower middle class or a middle class person goes, because we cater to that sort of a gentry, to take loan, then I think please make use of our online systems. We have also built a lot of online systems where you can see a lot of properties and their values. And once that happens, you can just contact us, take a sort of approval from us or just a NOC from us, and give that person the loan so that the money comes back into the system, right? We will build more houses, we will build more assets, and then this is how the economy grows. So the consultative mechanism should be from our side, and I think it should be from the bank's side as well. Thank you. Fantastic. And we had some great discussion here. I will request audience for a big round of applause for all our speakers. Thank you. Handing over to Garima ji.